Hello everyone. So welcome to our day 100 of our live study with me. It's a day 100 and I welcome everyone in the stream and first of all happy महाशिवरात्रि आप सभी को। ठीक है, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक सेटअप कर लिया है। नशा तेरा दिल को छुआ जरा तुझको बुला तेरे बिन मुमकिन तना गुजारा है। चश्मा ले लूँ। नशा तेरा दिल को छुआ देना जरा मुझको जगा तेरे बिन नामुमकिन इतना गुजारा है। जी हेलो एवरीवन। जी गेट से जी ओए ओए भैया भैया क्या है। धीरज कुमार हाय। Hello everyone, so welcome to our day 100 of our live study with me. It's a day 100 and I welcome everyone in our stream. Okay, and happy महाशिवरात्रि आप सभी को। आज हम लोगों ने सेंचुरी मार लिया। कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी लगी भाई।
ब्रो, स्नोरिंग को स्टॉप करने का एक ही तरीका है, मैं माइक ऑफ कर दूँ। चलने दो यार, क्या दिक्कत है। तेज तो हो रहा है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। Okay, so I have just made my setup. Okay, so फिर पढ़ते हैं ना। बड़ी बात मैकेनिक्स। Now okay. भगवान। चलिए, इट्स द टाइम कि मैं करता हूँ शुरू। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। ओके जी। पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में ओके, सो हेयर इट इज। फोर्स पढ़ना है, ठीक है। मोमेंट एंड कपल प्रिंसिपल ऑफ
miscibility Huygens theorem, resultant of force system, concurrent and non-concurrent coplanar forces. Okay, types of support, hinge support and load point. ठीक है ये हो गया. Free body diagram, equilibrium equations and support reactions, normal and shear stress, strain, Hooke's law, Poisson ratio, elastic constant and their relationship, stress strain diagram for ductile and brittle materials, factor of safety इतना syllabus है. क्वेश्चन अगर राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स 2 मार्क्स में. व्हाट डू मीन बाय शेयर स्ट्रेन 2 मार्क्स में. मेटेलिक वायर आप इतना इस डेप्थ इतना कैलकुलेट डिक्रीज 7 मार्क्स में आया था. ठीक है. और एक क्वेश्चन आते हैं. Receive a cross section obtained after yielding in cases of brittle material, explain in brief. ये सब भी आता है. ठीक है. फोर्स. फोर्स क्या होता है. Force is an external agent which may produce the following effects on an object. Force is an external agent which may produce the following effects on an object. First one is a force can move a stationary object. Force can stop a moving object. First one is force can move a stationary object. Force can stop a moving object. Force can change the speed of a moving object. Force can change the direction of a moving object. Force can change the shape and size of an object. बिल्कुल. Force is an external agent which may produce the following effects on an object. The first one is the force can move a stationary object, and the second one is force can stop a moving object. Third one is the force can change the speed of a moving object. Force can change the direction of a moving object. Force can change the shape and size of object. So it's basically it can move a stationary move a stationary, stop a moving, speed, direction, shape and size. ठीक है. क्या होता है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which may cause the following, which may produce the following effects on an object. Force is an external agent which may produce the following effects on an object. First one is the force can move a stationary object, and the second one is force can stop a moving object. Force can move a stationary object, and force can stop a moving object. Force can change the speed of a moving object. Force can change the direction of a moving object. Force can change the shape and size of an object. The SI unit of force is Newton. Force is denoted by F. Force. Force is a vector quantity determined by its magnitude, point of application. Characteristics of force क्या ही चार है भाई. Magnitude, point of application, line of action and the direction. Magnitude, direction, point of application, line of action. ठीक है. ठीक है. बढ़िया क्वेश्चन. देखो ठीक है. बिल्कुल. Force is a vector quantity determined completely by its. Force is a vector quantity. Force. Force is a vector quantity determined completely by its किससे magnitude, point of application, line of action
फोर्थ वन इज मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड ऐसे हो गया हमारा, देखो यहाँ पर देखो ये है कि मान लो हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसे कुछ हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, बढ़िया। और ये हमारा कुछ ऐसे है, ये क्या लाइन ऑफ एक्शन, व्हाट इज दिस, इट्स अ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा फोर्स लग रहा है, बढ़िया। अब देखो फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। तो यार इट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ए है, ऑब्वियसली ए इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ए पर का जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है हमारा 50 न्यूटन, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है ए है। लाइन ऑफ एक्शन बी सी है, लाइन ऑफ, अच्छा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस एक्शन में सारे काम हो रहे हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारा वो है वर्टिकल। क्या लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या है, वर्टिकल। सो लाइन ऑफ एक्शन हमारा है वर्टिकल, लाइन ऑफ एक्शन हमारा वर्टिकल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ए नहीं है तो स्टैंड मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल है, ये वर्टिकल की तरफ से आ रहा है ना, बिल्कुल। और डायरेक्शन ऑब्वियसली, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डाउनवर्ड। इसलिए अगर कोई पूछेगा तो डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, और अगर लाइन ऑफ एक्शन की बात करें किस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन से फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, बढ़िया। फोर्स सिस्टम क्या होता है, when many forces of different magnitude and direction act upon a body, when when many forces when many forces of different magnitude and direction act upon a body, when forces of, ठीक है, क्या, when many forces of different magnitudes and direction act upon a body, they constitute a force system. When many forces of different magnitude and direction act upon a body, ठीक है, they constitute a force system, ठीक है। देखो फोर्स सिस्टम जो होता है ना, फोर्स सिस्टम, तो फोर्स सिस्टम दो प्रकार का होता है। अच्छा पूछोगे कौन, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, प्लेन में लगेगा या फिर कोप्लेनर नहीं लगेगा, सिंपल, ठीक है। कोप्लेनर फोर्सेस या फिर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अच्छा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस को हम लोग स्पेसियल फोर्सेस कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अब इसके अगर प्लेन में नहीं है तो स्पेस में ही होगा ना, सिंपल। कर्व है तो वही तो प्लेन है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा प्लेन में नहीं स्पेस में होगा, ठीक है। तो फोर्स दो प्रकार का होता है, एक होता है कोप्लेनर फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। अच्छा कोप्लेनर फोर्सेस तीन प्रकार का होता है, कोप्लेनर फोर्सेस तीन प्रकार के होते हैं, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल, ठीक है। देखो एक होता है कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। कोप्लेनर फोर्सेस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एक होता है कॉन्करेंट, एक होता है पैरेलल, एक होता है नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, ठीक है, बढ़िया। देखो पैरेलल में क्या
लाइक फोर्स होता है, एक अनलाइक फोर्स होता है। लाइक फोर्स होता है, एक होता है अनलाइक फोर्स। One is a like force and another is an unlike force. अच्छा, तो जो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होता है वो भी कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, तीन प्रकार का हमारा नॉन कोप्लेनर एक स्पेशल फोर्स भी होता है। ठीक है, देखो, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा तीन प्रकार का होता है। ठीक है, बढ़िया। फोर्स सिस्टम में कुछ बात कर लेते हैं। और जैसे कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं, कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं। तो यार कोलिनियर फोर्सेस होते हैं ना, when all the forces act upon the same line, फिर when the line of action of all the forces are same, the line of action को बनाने क्या होता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस लाइन ऑफ एक्शन नहीं कहते, किस डायरेक्शन से लग रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन में बेसिकली किस डायरेक्शन से लग रहा है ना, वर्टिकल, डाउनवर्ड, that of things. Okay, so collinear forces क्या होते हैं, the line of action of all the forces are same along the straight line. The line of action of all forces lie along the same straight line and in the same plane. The lines of action of all forces lie along the same straight line and in the same plane. बढ़िया। ठीक है, the lines of action of all forces, the lines of action of all forces lie along the same straight line. ठीक है, the lines of action of all ठीक है, the lines of action of all forces lie along the same straight line and in the same plane. The lines of action of all the forces lie along the same straight line and in the same plane. Example का the force on a rope in a tug of war. क्या the force on a rope in a tug of war. ठीक है, बढ़िया ना। Now the next thing is coplanar parallel forces. Coplanar parallel forces क्या होता है? The lines of action of all forces are parallel to each other and lie in the single plane. Coplanar मतलब same plane, ले वो बात अलग है, lie in the same plane, सिंगल प्लेन, सेम प्लेन, मतलब बात लगभग सेम हुई। ठीक है, बढ़िया। सो कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाइन द सिंगल प्लेन। ठीक है, जैसे एक हमारा नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी है, एक सरफेस है, इस
ये देखो एक सर्कस है, ठीक है, एक सर्कस है, P1 लग रहा है, P2 लग रहा है, P3 लग रहा है, नीचे से लग रहा है A1 A2 जो कुछ लग रहा है। तो सब फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई अपॉन द सिंगल प्लेन, ठीक है। दैट्स व्हाई दे कॉल अ पैरेलल कॉन्करेंट फोर्सेस। अच्छा, कॉन्करेंट फोर्सेस पैरेलल नहीं, पैरेलल सॉरी पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस ना, या कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस की बात हम लोग कर रहे हैं। System of vertical loads acting on a beam. System of vertical loads acting on a beam. System of vertical loads acting on a beam. ठीक है, बढ़िया, ठीक है। System of vertical loads acting on a beam. ठीक है, बढ़िया। System of vertical loads acting on a beam. ठीक है जी। जैसे एक घर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो ईट लगी होती है, उससे वो क्या होता है, एग्जाम्पल होता है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो है, बाकी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस पढ़ लिए हम लोग, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ना बाकी है। ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, ऑब्वियसली कोप्लेनर है तो ऑल फोर्सेस विल लाई इन द सेम प्लेन and have different direction, let me read. Concurrent, ठीक है। All forces lie in the same plane, have different direction, but their line of action act at one point, but their line of action act at one point. All forces lie in the same plane, have different direction, but their lines of action act at one point. Hmm. Concurrent means line of action, तो all forces lie in the same plane, बढ़िया, have different direction, ठीक है, but the line of action are same, या फिर but the line of action act at one point, act at a single point, pass through a single point, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, act at one point कह सकते हो, ऑब्वियसली कह सकते हो, ठीक है। तो all forces lie in the same plane, have different direction, but their lines of action act at one point, ठीक है, बढ़िया। अगर पास और सिंगल पॉइंट है सब लोग हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट दिस आंसर इज राइट। ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, हैव डिफरेंट डायरेक्शन। देखो पैरेलल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, कोप्लेनर होते हैं, दैट मे बी। जी, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। एग्ज़ाम कब तक हैं? एग्ज़ाम है 20 मार्च तक मेरे। ओके,
So the lines of action of all the forces are parallel to each other and lie in the single plane. कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस ये दो हो गया, ठीक है. The line of action of all forces are parallel to each other and lie in the same plane. और यहाँ पे भी all the forces are lie in the same plane. Thank you. Lie in the same plane and have different direction. But their lines of action act at one point. But their lines of action act at one point. But their lines of action act at one point, but they pass through a single point. The point where the lines of action of the forces meet. The point where the lines of action of the forces meet. That is the point. That point is known as a point of concurrency. क्या कहते हैं? Point of concurrency of the system. Example: forces on rod resting against a wall. Forces on a rod resting against a wall. ये ठीक है. All forces lie in the same plane. Same plane. कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा force? ठीक है. बढ़िया. ठीक है. अब देखो मैं आता कोलिनियर क्या होते हैं? इसके लाइंस ऑफ एक्शन एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है. कोलिनियर क्या होते हैं कि the lines of action of all the forces are lying along the same straight line. ठीक है. लाइन ऑफ एक्शन सेम स्ट्रेट लाइन में. अच्छा, पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं? कोप्लिंग पैरेलल फोर्सेस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर. लाइन ऑफ एक्शन और पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. ये क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. क्या? Lines of action are parallel to each other. Lines of action are parallel to each other and obviously in the same plane. The single plane वो अलग बात है. Concurrent क्या होता है? All forces lie in the same plane but their line of action act at a single point. ठीक है. But their line of action act at one point. Line of action act at one point. Line of action act at one point. ठीक है. बढ़िया. ऐसे ही आएगा हमारा. अच्छा, जिस पॉइंट पे मिलते हैं सब लोग उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. द पॉइंट वेयर द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द, ठीक है. द पॉइंट वेयर द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस meet. The point where the lines of action of the forces meet is known as the point of concurrency of the system. The point where the lines of action of the forces meet is known as the point of concurrency of the system. The point where the lines of action of the forces meet, that point is known as the point of concurrency of the system. Example: forces on a rod resting against a wall. Forces on a rod resting against a wall. This is the type of force. ठीक है. क्या देखो, एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसे. तो that point where all the line of action of the forces meet is known as the point of concurrency. ठीक है. बढ़िया. कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. अच्छा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होगा? दे लाई इन द सेम प्लेन. बढ़िया. हैव डिफरेंट डायरेक्शन. बढ़िया. नॉन कॉन्करेंट लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट एट अ सिंगल पॉइंट. दे आर नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. ये होगा. ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन
but the line of action do not pass through a single point. बढ़िया, ठीक है। क्या करें? सिंपल इन होगा लाइन ऑफ एक्शन do not pass through a single point. Do not pass through a single point. ठीक है। But the lines of action do not pass through a single point. All forces lie in the same plane, but the lines of action do not pass through a single point. अच्छा, एग्जाम्पल में बात करें, फोर्सेस ऑन अ लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, फोर्सेस ऑन अ लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड फोर्सेस ऑन अ लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कोप्लेनर कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। यहाँ पर हो गया हमारा क्या हो गया, वो कॉन्करेंट फोर्सेस हो गया। क्या हो गया? कॉन्करेंट फोर्सेस हो गया। ठीक है, बढ़िया। और हमारा हो गया कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की बात किया जाए, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की बात किया जाए तो फोर्सेस ऑन अ लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड अ पर्सन आउटस्टैंडिंग ऑन अ रंग व्हिच इज नॉट इन एट इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, which is not at the center of gravity। मतलब बेसिकली बीच में ना खड़ा हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नहीं रहेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट नॉन नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पहले पढ़ते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। All forces do not lie in the same plane. नॉन कोप्लेनर मतलब कि all forces do not lie in the same plane। बढ़िया। But the lines of action pass through a single point. But the lines of action pass through a single point। अच्छा, कि concurrent obviously lines of action will definitely pass through a single point। ठीक, ठीक है भाई। और देखो non-coplanar concurrent forces, all forces do not lie in the same plane and concurrent and the line of action act at a single point and the line of action pass through a single point फिर act at a single point। For example, forces on a tripod carrying a camera, forces on a tripod carrying a camera। ठीक है, बढ़िया। देखो एक हमारा एक है, ये हमारा एक ट्राइपॉड है, कैमरा रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो कॉन्करेंसी है बढ़िया, ठीक है, कॉन्करेंट तो होगा बट नॉन कोप्लेनर होगा, एक प्लेन पे नहीं लग रहा है। क्या देखो, all forces lie in the same plane but their lines of action do not pass through a single point। But their lines of action do not pass through a single point। All forces lie in the same plane but their lines of action do not pass through a single point।
ठीक, बढ़िया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑब्वियसली भाई, फोर्सेस ऑन अ लैडर forces on a ladder resting against a wall, and a person standing on a rung which is not at its center of gravity. बढ़िया। अच्छा, नॉन कोप्लिनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्या ऑल फोर्सेस डू नॉट लाइन द सेम प्लेन, फर्स्ट वन इज एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट और दियर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, आर दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, ऐसा कुछ। But the line of action pass through and मैं नॉन कोप्लिनर नॉन कॉन्वेंट फोर्सेस बात कर रहा हूँ ना। आल फोर्सेस डू नॉट लाइन द सेम प्लेन एंड द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, कह रहा हूँ ना। एंड द लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट एट अ सिंगल पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, बट द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, बट द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट। जी पारस मालवीय जी, गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हो? All forces do not line the same plane and the line of action don't make a single point. Forces acting on a moving bus, ठीक है, जो मूविंग बस में जो फोर्स लाइक कर सॉरी जो all forces do not line the same plane and their lines of action do not meet at a single point and their lines of action do not meet at a single point। लाइक कर दिए, थैंक यू भाई, थैंक यू। All forces do not line the same plane and their line of action do not meet at a single point। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को एक बार फिर से। All forces do not line the same plane and their lines of action do not meet at a single point and the line of action do not meet at a single point। ठीक है, क्या फिर करते क्या फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। All forces do not line the same plane and the line of action meet at a single point। Forces acting on a moving bus, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बस, ठीक है, मिला है हमारा। अच्छा, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन प्लेनर पढ़ेंगे, बाकी उसी की बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं। पहले नॉन कॉन्करेंट देखो, नॉन कोप्लेनर का ऑल फोर्सेस आर नॉट लाइन द सेम प्लेन एंड पहले में क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, तो उसी की बेसिस पे हम लोग सबको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल की बात क्या करें तो लाइन ऑफ एक्शन नॉट पास टू सिंगल पॉइंट। नो देखो, नॉन कॉन्करेंट क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट पास टू सिंगल पॉइंट। नॉन पैरेलल क्या होता है, दे आर ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, बस बढ़िया। और क्या चाहिए भाई। और कोप्लेनर क्या होता है, एक ही प्लेन में लाइक करेगा, बस खत्म। अहमदाबाद जा रहे हो, हैप्पी जर्नी। ओके, एंड द फोर्स सिस्टम कोप्लेनर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर है जैसे जो पैरेलल है उसको दो प्रकार में डिफाइन कर सकते हैं, एक लाइक एक अनलाइक। तो लाइक क्या होता है, मतलब सेम प्लेन एंड लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, क्या है कोप्लेनर, मतलब लाइक हो गया एंड अनलाइक।
तो दोनों में जो कॉमन होगा कि सेम प्लेन में होगा, और दूसरा है कि लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर होगा। लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर तो होगा ही, बाकी इन द सेम डायरेक्शन तो सेम प्लेन, इन द अपोजिट डायरेक्शन तो मतलब डिफरेंट प्लेन, मतलब अनलाइक। फर्दर द सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम if the forces are in the same direction. If the forces are in the same direction, the system is called coplanar unlike forces if the forces are in the opposite direction. तो opposite direction में तो obviously हमारा अलग हो जाएगा, unlike parallel coplanar unlike parallel forces, ठीक है। ऐसे सेम डायरेक्शन में हो तो coplanar like parallel forces। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स आता है। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स ना इज क्वाइट अ इजी टॉपिक आई विल से। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट is the product of the magnitude of the force. The moment of a force about a point is a product of the magnitude of a force and the perpendicular distance from the line of action of the force acting from the point, from the force acting from the same point, ठीक है। क्या देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज a product of the moment of force about a point is the product of the moment of force about a point is the product of the magnitude of the force, is product of the magnitude of the force, is a product of the magnitude of the force, ठीक है। the moment of force about a point, the moment of force about a point is the product of the moment of force about a point, the moment of a force about a point is a product of the magnitude of the force and the perpendicular distance from the line of action, and the perpendicular distance from the line of action, and the perpendicular distance from the line of action, and the perpendicular distance from the line of action of the force from the same point, and the perpendicular distance from the line of action of the force from the same, देखो the moment of a force about a point is the product of the magnitude of the force and the distance and the perpendicular distance from the line of action of a force from the same point, ठीक है। The moment of force about a point is the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance and the perpendicular distance from the line of action, and the perpendicular distance from the line of action, and the perpendicular distance from the line of action, and the perpendicular distance from the line of action of the force from the same point, from the force from the same point,
point the moment of force, the moment of force about a point, the moment of force about a point is the product of the magnitude of the force. The moment of a force about a point, the moment of a force about a point is the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance from the line of action to and the perpendicular distance from the line of action of the force from the same point from the same point from the same point. Okay. The moment of force about a point is a product of the magnitude of the moment of force about a point is the product of the magnitude of a force. It's a product of the magnitude of force and the perpendicular distance perpendicular distance and the perpendicular distance and the perpendicular distance from the and the perpendicular distance and the perpendicular distance comes from the line of action. Now from the initial point क्या कह सकते हैं and the perpendicular distance फिर से the moment of force is the product of the magnitude of the force. The moment of force about a point होगा ना, the moment of force about a point, right? The moment of a force about a point is the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance from the line of action of the force from the same point. So the moment of force about a point, the moment of force about a point is the product of the magnitude of the force. The moment of a force about a point is the product of the magnitude of the force in the perpendicular distance from the line of action of the force from the same point, and the perpendicular distance from the line of force from the line of action of the force. Okay. Yeah. And the perpendicular distance from the line of action of the force from the same point. From the line of action of the force. From the line of action of the force. From the line of action of the force. From the line of action of the force from the same point. From the line of action of the force. From the line of action of the force from the same point. ठीक है, ऐसे क्या देखो, ये हमारा कोई है हमारा, ठीक है, हमें एट अ पॉइंट ओवर पूछा है, मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो फोर्स
magnitude of the force into perpendicular distance from the line of action of the force, from the line of action of the force, from the line of action of the force. ठीक है. भगवान. ठीक है. सो देखो, फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट टू इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कैसे देखो, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज द perpendicular distance from the line of action of force. ठीक है. दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स at a point O. Magnitude of the force body and the perpendicular distance from the line of action of the force. The moment of force about a point is the दूसरा क्या? What is the second one is? तो second one is basically देखो, फोर्स हमारा परपेंडिकुलर नहीं, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं, तो क्या रहेगा? मोमेंट एट अ पॉइंट ऊपर चाहिए. तो देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, जीरो है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जीरो है. ठीक है. ठीक है, बढ़िया. देखो क्या सेकंड हमारा कुछ ऐसा है कि मान लो जैसे एक फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया. क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल हो गया. लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होगा? अगर इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालता है पॉइंट, मान लो हमें पॉइंट ओ पर निकालना है, तो ओ से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो है ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो होगा. बात ही खत्म. तो फोर्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो. मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो आ गया. थर्ड वन इज दैट इज, मान लो पॉइंट ओवर हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स, और एक पॉइंट जहाँ पर कुछ ऐसे किसी एंगल बनाकर फोर्स एक्ट कर रहा है. एंगल क्या है? थीटा. तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. श्योर हो ना? बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि नहीं. देखो, क्योंकि ये श्योर हो तुम तो आगे कैलकुलेट करते हैं. फोर्स तो यहाँ लग रहा है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अच्छा, अगर हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं
तो वो भी तो इसका जो होगा एक पार्ट ही होगा हमारे फोर्स का, बिल्कुल होगा। तो देखो तो एफ साइन थीटा एंड दिस वन इज एफ कॉस थीटा। अच्छा देखो, इस पॉइंट की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, मान लो पॉइंट डी डी, तो ये जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो फोर्स आ रहा है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी है, तो मोमेंट एट पॉइंट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, एफ कॉस थीटा इंटू जीरो प्लस, और एफ साइन थीटा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है इंटू डी डी। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू डी, साइन थीटा इंटू डी, एफ साइन थीटा इंटू डी। बढ़िया। हे भगवान, राधे राधे। ठीक है, बढ़िया। कपल फोर्स की हम लोग बात करें उससे पहले, क्या उससे पहले ये है कि मैं 10 सेकंड में वापस आ, ठीक।
आगे देखते हैं कपल. So when two equal and opposite forces are applied simultaneously at different points on a body. ठीक है. When two equal and opposite forces are applied simultaneously at different points on a body, their resultant force is zero. When two equal and opposite forces are acting on a body, when two equal and opposite forces are applied simultaneously on a body at different points, okay, when two equal and opposite forces are applied simultaneously at different points on a body, and two equal and opposite forces are applied simultaneously at different points on a body, their resultant force is zero. But both these equal and opposite forces try to rotate the body in the same direction. But both the equal and opposite forces, both these, both these equal forces, but both these equal and opposite forces try to rotate the body in the same direction. These two forces form the couple. ठीक है. जब एक ही बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो उनका जो नेट रोटेशन होता है, फिर नेट मूवमेंट होता है, जीरो हो जाता है. बट लेकिन दोनों जो फोर्सेस होते हैं कि एक दूसरे को हमेशा रोटेट करने की कोशिश कर सकते हैं. और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कि इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कपल. These two forces formed a couple. जी 10th क्लास नेक्स्ट टॉपर जी ब्रो, हैप्पी महाशिवरात्रि आपको भी, एंड वेलकम टू आवर स्ट्रीम. ठीक है, बढ़िया. ना तो सेकेंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है? कपल तो सबको पता है ना, टू अपोजिट इक्वल अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन अ सिंगल पॉइंट एंड द नेट मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो. ठीक है, इन बात फोर्सेस टाइम टू रोटेट द बॉडी. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी of forces. Principle of transmissibility of forces. ठीक है, ठीक है.
So principle of transmissibility of forces, ठीक है. क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस? It states that the point of application of a force may be shifted to any other point along the line of action and in the same direction. The body will remain in the equilibrium state. कह रहा है कि अगर तुम फोर्सेस को सेम लाइन ऑफ एक्शन में सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शिफ्ट करो तो बॉडी उसी इक्विलिब्रियम में होगी जैसे पहले थी या फिर उसी से मूव करेगी जैसे पहले मूव कर रही थी. देखिए इट स्टेटेड दैट the point of application of a force can the point of application of a force may be shifted to any other point. It states that the point of application of a force may be shifted to any other point. It states that the point of application of a force may shifted to any other point. ठीक है, देखो it states that the point of application of a force may be shifted to another point. It states that the point of application of a force may be shifted to any other point. It states that the point of application of a force. It states that the point of application of a force may be shifted to any other point. It states that the point of application of a force may be shifted to any other point that is along the line of action and in the same direction. Along the line of action and in the same direction, body will remain in the equilibrium state. कितना गजब और कितना अच्छे तरीके से बताया गया यार. It states that क्या किसके बारे में बात हो रही है? So it states that the line of action of all the forces, that is the point of application of force. It states that the point of obligation it states that the point of application it states that the point of application of a force the point of application of a force the point of application of a force it states that the point of application of force may be shifted to another point. It states that the point of application of a force may be shifted to another point, may be shifted to any other point. ठीक है. It states that the point of application of force may be shifted to any other point. It states that the point of application of force may be shifted to another point. It states that the point of application of force states that the principle of transmissibility. It states that
The point of application of force. The point of application of force. The point of application of a force may be shifted. It states that the point of application of a force may be shifted to any other point. May be shifted to any other point along the line of action and in the same direction. The body will remain in the equilibrium state. States that the point of application of force may be shifted to another point. Okay, along the line of action. Along the line of action. Along the line of action. Along the line of action and in the same direction. The body will remain in the equilibrium state. It states that the point of relation of a force may be shifted to any other point along the line of action and in the same direction, and the body will remain in the equilibrium state. And the body will remain in equilibrium state. Well, ठीक है देखो it states that the point of application of a force may be shifted. Principal transferability क्या कहता है it states that the point of application of a force may be it states that the point of application of a force may be shifted to another point. It states that the point of application of a force may be shifted to any other point along the line of action. पहला क्या along the line of action and in the same direction of the body. ठीक है क्या क्या बताता हूँ देखो. It states that the point of application of a force may be shifted to another point. It states that the point of application of force may be shifted to another point along the line of action and in the same direction. Along the line of action and in the same direction, and the body will remain in equilibrium state. And the body will remain in equilibrium state. It states that the point of application of force may be shifted to any other point. It states that the point of application of force may be shifted to another point along the line of action and in the same direction, and the body will remain in equilibrium state. It states that the point of application of force. It states that the point of application of a force. It states that the point of application of a force may be shifted to another. May be shifted to another point. May be shifted to another point. कहाँ along the line of action and in the same direction. Along the line of action and in the same direction, and the body will remain in equilibrium state. Along the line of action and in the same direction. Along the line of action and in the same direction. ठीक है along the line of action and in the same direction, and the body will remain in equilibrium state. ठीक है it states that the point of application of force may be shifted to another point along the line of action and in the same direction, and the body will remain in equilibrium state. 100% सही है. ठीक है बढ़िया. मान लो लाइन ऑफ एक्शन है
ये पॉइंट पर लग रहा है, इसका देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ कर दिए, ठीक है। ठीक है, हे भगवान, ठंडी बढ़ गई क्या यार, ठंडी क्यों लग रही है? जैसे जैसे दिन होता जाता है, मतलब मॉर्निंग, वैसे वैसे ठंडी बढ़ जाती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। और बाकी उसके पहले जैसे 4 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक तो ठंडी थोड़ा कम रहती है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज। अच्छा देखो, वेरिएबल थ्योरम बचा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन पैरेललोग्राम, ठीक है, बीम, रोलर, सपोर्ट, सपोर्ट, पिवट डायग्राम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सही करा था ना? स्ट्रेस है किलो में, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड, 7 स्लाइड, 8 स्लाइड, 9 स्लाइड, 10 स्लाइड, 11 स्लाइड, 12 स्लाइड, 13 स्लाइड, 14, 15, काफ़ी है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है काफ़ी। देखो, सब मान लो ये हमारा कोई पी है पॉइंट, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन है। अब इसके अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पर, इसके हम लोग किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने लगेगी। बट के along the line of action, along the line of action, बिल्कुल, एंड इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, फिर सी टी along the same, this is A, this is B, and this is B, ठीक है, B। तो इसलिए अगर यहाँ 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 लेकर गया गया है, वेरिग्नान्स थ्योरम, ठीक है। अच्छा आप देखो, आप देखो, टोपी लगा लेता हूँ ठंडी में। नशा तेरा
जोगीरा सारा होली में रंगीले हो गए. Okay. I'm looking in the beginning. Now the next thing is very nice. That is the most important thing. Remember it though. It's the most important topic of this chapter. You can order questions are 100% angle. VARIGNONS very nice. क्या Varignon's theorem कहते हैं? If many coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of the moments of all the forces about a point in the plane is equal to the moment of the resultant about the same point. फिर से कह रहा है कि if many coplanar forces मतलब सेम प्लेन पर जैसे कॉन्करेंट भी हो सकते, पैरेलल भी होते, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल भी हो सकते, लाइक एंड लाइक हो सकता है पैरेलल में. If many coplanar forces are acting on a body, if many coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of the moments and then the algebraic sum of इसके the moments of all the forces about a point. The moment of all the forces about a point. Moment of all the forces about a point. Moments of all the forces about a point in the plane. Moments of all the forces about a point in the plane is equal to the moment of the resultant. Is equal to the moment of the resultant about the same point. Is equal to the moment of the resultant about the same point. If many coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of the moments of all the forces, then the algebraic sum of the moments of all the forces. Moment क्या होता है? Moment of force क्या होता है? MOF. The moment of force about a point is the product of the magnitude of the force and the perpendicular sum of the line of action on the same point. वही तो कह रहा भाई, product of magnitude and product of the magnitude of the force and the perpendicular from the initial locus with that again. So if many coplanar forces are acting on a body, if many coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of all the forces about a point in the ठीक है. If many coplanar forces are acting on a body, then the algebraic sum of the moments of the forces about a point in the plane is equal to the moment of the resultant about the same point. Is equal to the moment of the resultant when the moment of the resultant about the same point. ठीक है. Let us consider two forces F1 and F2 acting on a body. Let consider two forces F1 and F2 acting on a body as shown in the figure. बढ़िया. Let R be the resultant of F1 and F2. बढ़िया. Now taking moment of F1, F2 and R about point A. About point A,
ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से देखो। If many covalent forces are acting on a body, then the algebraic sum of the moments of all the forces, then the algebraic sum, then the algebraic sum of the moments of all the forces acting about a point acting upon a body. If many covalent forces are acting on a body, then the algebraic sum of moments of all the forces, then the algebraic sum of moments of all the forces, then the algebraic sum of the moments of all the forces about a point in the plane is equal to the moments of the resultant about the same point is equal to the moment of the resultant about the same point. ठीक है, let R be the resultant of F1 and F2. Now taking moment of F1, देखो F1 का मोमेंट क्या होता है, F1 इंटू Fn इंटू इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज D1 निकालना है। ठीक है, F1 के बाद OA, F1 के बाद क्या हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा D1 है, क्या हमारा ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, हमारा D1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, D1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा D1 है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा D1 है। ठीक है, एंड D1 होगा ठीक है, बढ़िया। सो ऑब्वियसली बात करें, जैसे देखो θ1 है तो θ1 क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हमारा ना, ऐसे एक ही हमें D1 चाहिए। देखो हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है ना, cos θ1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में हाइपोटेन्यूस ए बी अपॉन में ओ ए। अच्छा लेकिन ओ ए क्यों लेंगे भाई, अच्छा cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि cos लेंगे
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, वही कॉस थीटा वन। लाइक दिस डी टू हमारा आ जाएगा वही कॉस थीटा टू, और डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वही कॉस थीटा। ठीक है। ओके ओके ओके। रूम में
माइक ऑफ था। कैसे आ सकता है, समझ ही नहीं आया मुझे। cos theta plus into cos theta plus into cos theta cos theta is serious। कैसे हो सकता है? और cos theta क्या होगा? और cos theta देखो, और cos theta अच्छा ठीक है। ये वन cos theta प्लस में टू cos theta टू इसे बोलो r cos theta, बट कैसे भाई कैसे यहाँ पे देखा जाए तो देखो, मैं ऐसे देखो देता हूँ, ठीक है। एफ वन इंटू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, थीटा वन है, ऐसे तो देखता हूँ ऐसे थीटा, इसे थीटा डी वन है, वो ये है, वो भी ओ है, ठीक है। डी वन यहाँ पर हो गया ओ बी, वहाँ पर हो गया ओ ए, ओ बी ओ ए, ठीक है। तो ठीक है, क्या ओ बी, ठीक है, ओ बी, ठीक है। अब देखो देखो कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात तो हमारा है कि डी वन, डी वन तो है नहीं, अच्छा मैं कैसे किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं डी वन का कैलकुलेट कर रहा हूँ ना भाई, बिल्कुल यार, मैं डी वन का ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डी वन इसका बेस है, फिर ए भी बेस है, और हाइपोटेनस ओ ए भाई। देखो यार, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, हमें एफ वन कॉस थीटा, क्या चाहिए एफ वन कॉस थीटा, तो ओ बी एफ वन ठीक है, जैसे ए बी ऐसे डी वन, तो एफ वन कॉस थीटा वन, कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है यार ये। ठीक है, सही देखो, इसको देखते हैं बाद में समझेंगे, ठीक है। एफ वन कॉस थीटा वन प्लस में एफ टू कॉस थीटा टू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया
O into r cos theta हो जाता है फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या मिला दैट इज f1 d1 प्लस में f2 d2 which is equal to from equation number third is like OA r cos theta or OA r cos theta that is f1 OA r cos theta that is RD मिलेगा हमें RD R डॉट में D R dot में D hence proved what we have to prove for n number of time for n number of forces for n number of forces for n number of forces के लिए f1 d1 प्लस में f2 d2 f3 d3 प्लस में is equal to RD is equal to RD ठीक है and by the moment of क्वेश्चन है ये कहता है if many covalent forces are acting on a body if many covalent forces are acting on a body then the algebraic sum of moments of all the forces in the algebraic sum of moments of all the forces algebraic sum of in the algebraic sum of moments of all the forces algebraic sum of moments of all the forces about a point in that in the plane then the algebraic sum of moments of all the forces about a point in the plane is equal to the moment of the resultant about the same point. The sum of moment of all the forces about a point in a plane is equal to the moment of their resultant about the same point. And we have just done it. Now determine the moment of a 400 Newton force acting at B. Determine the moment of 400 Newton force acting at point B in xy plane about point A as shown in the figure. So देखो determine the moment of 4 Newton of force. Determine the moment of 4 Newton force acting at B about point A as shown in the figure. पॉइंट है ठीक है बहुत ही सिंपल लेसन है ये देखो जो हमारा फोर्स लग रहा है फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है तो कहते हो 400 न्यूटन जो फोर्स है इस साइड लग रहा है 400 cos 30 4 sin 30 ठीक है और बस एक ही अंतर है मोमेंट एट इज इक्वल टू चार सौ साइन 30 ऊपर हो गया 400 cos 30 इधर हो गया 30 डिग्री के एंगल पे है हमारा कैसे पता चला 30 डिग्री एंगल पे है
ठीक है अपने ठीक तो हो रहा है। तो ठीक है मोमेंट एट इज इक्वल टू मोमेंट एट दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट ना फोर्स एक्ट कर रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं है। फोर्स एक्ट कर रहा है ना इसका ना कुछ मोमेंट तो ऑब्वियसली rather is perpendicular. ठीक है ठीक है बढ़िया फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी पॉइंट इज ऑन द फिगर। ठीक है मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अच्छा ठीक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस 50 forces acting at a point are represented in both magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram. Then the resultant of these two forces can be represented in magnitude and direction by the diagonal passing through the that point of the parallelogram. The resultant वही आर इज इक्वल टू रूट में बी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा सबके सब होता है ठीक है। अच्छा प्रूफ आता है कि नहीं आता नहीं आता ठीक आता तो नहीं होगा ठीक है। अब बस धीरे चलना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा वही होगा भाई अल्फा अल्फा छोड़ो ठीक है हाँ एक बार बोलो कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्फा वन बी कॉस अल्फा वन में ये भी साइन से कैसे हो जाता है ठीक है तो इनका फाइंड होता है बिल्कुल वही सी बात हो रही है डायरेक्शन ऑफ आर वैल्यू हो जाएगा आप चिंता करो। रिजल्टेंट ऑफ कोप्लिनर कॉन्करेंट force system coupling concurrent force system when two or more than two forces acting at a point when two or more than two forces acting at a point when two or more than two forces are acting at a point एनालिटिकल मेथड ठीक है और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डायरेक्शन रिजल्टेंट एक्स एक्सिस बीम ठीक है बहुत सारे लेवल सम ऑफ फोर्स एक्स एक्सिस सम ऑफ फोर्स बाय एक्स ठीक है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लिनर concurrent force level sum of force resultant beam is defined as a structural member whose one dimension
Beam क्या होता है? Beam is defined as a structural member whose one dimension is very large compared to other lateral dimensions. Beam is defined as a structural member whose one dimension is very large as compared to other lateral dimensions. Beam can be defined as a structural member which is subjected to a shear forces. No. So, beam is defined as a structural member whose one dimension is very large as compared to other lateral trace. Right. So, beam is defined as a structural member. Beam is defined as a structural member. Beam is defined as a structural member whose one dimension is very large. Whose one dimension is very large as compared to the lateral dimensions as compared to all other lateral dimensions. Beam is defined as a structural member. Beam is defined as a structural member whose one dimension is very large. Beam is defined as a structural member whose one dimension is very large as compared to other lateral dimensions. Types of support. Types of support बात करेगा. Beam is defined as a structural member whose one dimension is very large. Yeah. Beam is defined as a structural member whose one dimension is very large as compared to the other lateral dimensions. ठीक है. Roller support, hinge या फिर pin support, fixed या फिर built support. Fixed roller support, hinge support, fixed support. रोलर सपोर्ट क्या होता है? रोलर है ना. रोलर से क्या होता है? रोटेशनल इज परमिटेड. एक्सियल मोशन इज परमिटेड. रोटेशनल इज परमिटेड. ओनली वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड. रोलर क्या होता है? एक्सियल मोशन इज परमिटेड. रोटेशन इज परमिटेड. But only vertical motion is restricted. As a number of reaction 1. Number of reaction 1 RB. Yeah. दूसरा है कि पिन या फिर हिंज सपोर्ट.
मतलब क्या हिंज मतलब क्या होता है, एक टांग देना, बेसिकली टांग देना। सो वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, क्या वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, हिंज सपोर्ट में कर गया किधर टांग दिया गया, तो वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गया। एक्सियल मोशन भी कहीं नहीं रेस्ट्रिक्ट हो गया है। रोटेशन मोशन इज परमिटेड, अगर हिंज है तो डुक चुप डुक चुप डुक चुप डुक चुप डुक चुप लगता है। ओके, सो रोटेशन इज परमिटेड, हिंज में रोटेशन इज परमिटेड, एक्सियल एंड द वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, नंबर ऑफ रिएक्शन दो, क्योंकि दूसरे साल आ रहा है बस, आर ए बी एन आर एच, आर ए बी एन आर एच, ठीक है। आर ए बी टेन थी फिक्स सपोर्ट क्या होता है, फिक्स सपोर्ट क्या होता है, फिक्स सपोर्ट इसलिए भी लगता है जैसे फिक्स नाम, बट हिंज अलग है, फिक्स अलग। फिक्स मतलब फिक्स, एक बार फिक्स कर दिया तो देखो क्या होगा, वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, और फिर फिक्स सपोर्ट में फिक्स कर दी, खत्म बात। वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड, एक्सियल मोशन रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, नंबर ऑफ रिएक्शन थ्री, नंबर ऑफ रिएक्शन थ्री, ठीक है। आर ए बी इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। बढ़िया। टाइप्स ऑफ लोड सब्जेक्टेड टू बीम, टाइप्स ऑफ लोड सब्जेक्टेड टू बीम, following are the types of loads which are subjected to a beam. Following are the types of load which are subjected to a beam. Concentrated load, बोले तो point load, uniformly distributed load, बोले तो QTL, uniformly varying load, QVL, external moment, yeah. Concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varying load, and external moment. ठीक है। Concentrated load, uniformly distributed load, concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varying load, external moment, concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varying load, and external load. ठीक है भाई, अब देखो, ठीक है। कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड एंड एक्सटर्नल मोमेंट, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, देखो, सच अ डायग्राम ऑफ द बॉडी इन द बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, सच अ डायग्राम ऑफ द बॉडी in which the body is free from all the contact surfaces and all forces acting on it, and all the forces acting on it is called favor diagram, including reactions. Such a diagram of the body in which the body is free from all the contact surfaces. Such a diagram in which the body is free from all the contact surfaces, and all the forces acting on it, and all the forces acting on it is called figure diagram, and all the forces acting on it, including reactions, and all the forces acting on it, and all the forces acting on it is called free body diagram. ठीक है, तो ये इंक्लूडिंग रिएक्शन ऑब्वियसली एक बार है, ये एफ बी डी इसका रिएक्शन ऊपर जा रहा है, वेट नीचे आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, वेट इधर है, रिएक्शन इधर है,
बॉडी डायग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ है ही ना, इसमें तो बस बताना है रिएक्शंस को इन्वॉल्व सारे फोर्सेस दिखा दो, खत्म बात। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का होते हैं। A body state being equilibrium when the resultant of all the forces acting on the body is zero. Equilibrium equations for the coplanar concurrent forces. Coplanar concurrent forces. The algebraic sum of the components of forces along the x direction is zero. The algebraic sum of the components of the forces along the x direction is zero. And the algebraic sum of components of all the forces along the y direction is zero. Maximum. ठीक है, बढ़िया। So equilibrium equations for coplanar non-concurrent forces. Coplanar non-concurrent forces. The algebraic sum of compounds of all forces along the x direction is zero. The algebraic sum of the components of all forces ठीक है, बढ़िया। Equilibrium equations for coplanar non-concurrent forces. The algebraic sum of the components of the forces along the x-axis is zero, y is zero, and the moment is zero. The algebraic sum of all the moments of all the forces is zero. स्ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। Okay, so our one topic is one part is complete, and now we are going to move on to the second part. Okay, stress का था। तो it is defined as internal resisting force per unit cross sectional area. स्ट्रेस क्या होता है? It is defined as the internal resisting force. It is defined as internal resisting force per unit cross sectional area. It is defined as internal resisting force per unit cross sectional area. It is defined as a resisting force per unit cross sectional area. मैंगनीमीटर जी, मैंगनीमीटर, रिमेंबर मी? नहीं भाई, अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर बाई ए, दैट इज आर इज न्यूटन, अब ए मीटर स्क्वायर। नो नहीं, अभी नहीं याद आ रहा यार। ठीक है, और प्रेशर इस साइड होगा, एक्स साइड। यूनिट ऑफ स्ट्रेस का होगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फिर किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। पास्कल 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिफॉर्मिंग फोर्स है, यहाँ पर निकल रही है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। मैथ नहीं, मैकेनिकल पढ़ा है। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इंजीनियरिंग, यस इंजीनियरिंग, बीटेक फर्स्ट ईयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, stress is said to be normal stress when the direction of the deforming force is perpendicular to the cross sectional area of the body. Normal stress is said to be normal stress when the direction of deforming force is perpendicular to the cross sectional area of the body. When the direction of deforming force is perpendicular to the cross sectional area of the body. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। Second is the tensile stress. When a structural member is subjected to two equal and opposite tensile forces, when
A structured member is subjected to two equal and opposite tensile forces. The stress produced is called tensile stress. The stress produced is called tensile stress. The tensile stress at any cross section X is given by the tensile stress. The tensile stress at any cross section X is given as P upon A. ठीक है, क्या P upon A मतलब समझ रहे हैं ना. And a structure member is subject to a two equal and opposite tensile forces. The stress produced is called tensile stress. The stress produced is called tensile stress. The tensile stress at any cross section X is given by this compressive stress होता है. ठीक है, फोर्स इस साइड लग रहे हैं. ठीक है, फोर्स इस साइड लग रहे हैं. प्रेशर इस साइड लग रहा है. फोर्स है ना. Normal stress when the action of the on the action of the deforming force perpendicular to the cross section area of the body. Compressive stress का होता है ना. When a structural member is subjected to two equal and opposite compressive forces. When a structural member is subjected to two equal and opposite compressive forces, the stress produced is called compressive stress. The compressive stress at any cross section X is given by P upon A. अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल में तो प्रोडक्ट जो होता है हमारा उसमें एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी आता है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आल्सो नोन एज volumetric stress also known as hydrostatic stress or bulk stress. ठीक है, is a type of stress that is associated with the uniform deformation of a material due to the application of an external volumetric stress also known as hydrostatic stress or bulk stress is a type of stress that is associated with the uniform deformation of a material due to the application of an external force or system pressure. ठीक है. Volumetric stress leads to changes in the volume of the material without altering its shape. Volumetric stress leads to the change in the volume of the material without altering its shape. Volumetric stress is typically expressed in terms of pressure. Types of stress. Shear stress. Stress produced by a force tangential to the surface of the body is known as shear stress. Stress produced by a force tangential to the surface. ठीक है. तो stress produced by a force tangential to the surface of body is known as shear stress. It is denoted by tau. Consider a rectangular block ABCD fixed at the both plane are subjected to tangential force P at the upper plane. Then shear stress is equal to tangential stress upon area of the face DCFE. ठीक है, shear stress का आता है tangential force upon area of the face DCFE, that is P upon BL. A body is said to be strained when the relative position of the particles is changed due to loads acting on the member. A body is said to be strained ठीक है. The deformation strain a body is said to be strained when the relative position of the particle is changed due to loads acting on the member. ठीक है, बढ़िया. अब देखो a body is said to be strained when the relative position of the particle is changed due to loads acting on the member.
A body is said to be strained when the relative position of the particle is changed due to the loads acting on the member. The deformation per unit of original length is called strain. The deformation per unit length of original length is called strain. It can be defined as a ratio of change in dimension. It can be yeah. A body is said to be strained when the relative position when the relative position of the particles is changed due to the loads acting on the member. Okay, the deformation per unit of original length is called strain. The deformation per unit of original length is called strain. It can be defined as the ratio of change in the dimension of and original dimension. It can be defined as the ratio of change in dimension to the original dimension. He dreaming the Sultan the Bible come to our stream. A change in the dimension upon original dimension. Strain is a dimensionless quantity. Like this is this types of strain. Strain are two types: normal strain and shear strain. Normal strain are three types. First is a longitudinal strain, lateral strain and volumetric strain. Types of strain बात करते किया जाए. Longitudinal strain and lateral strain. Strain is in the direction of applied load. Is strain in the direction of applied load. Strain in the direction of applied load is called longitudinal strain or primary strain or linear strain. Longitudinal strain का the change in length upon original length. Change in length upon original length or delta L by L. Strain in the perpendicular direction of the applied load is called lateral strain. The strain in the perpendicular direction of the applied load is called lateral strain. Strain in the direction of applied load is called longitudinal strain. Strain in the direction of applied load is called longitudinal strain. Strain in the perpendicular direction of the applied load is called lateral strain. Strain in the perpendicular direction of the applied load is called lateral strain. चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिन डायमीटर अलग हो जाएगा. सी स्ट्रेन ठीक है. बढ़िया. देखो मैं बता रहा हूँ ना. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ. लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. क्या होता है? चेंज इन डायमीटर अपॉन original diameter. There is lateral strain. Types of strain: longitudinal strain or shear strain. Strain produced by a force tangential to the surface of body is called known as shear strain. Under the action of tangential force, the block ABCD gets distorted and takes the shape of ABCD as detailed by deforming through an angle of phi. Tan phi is also 60 days upon BC because angle phi is very small than tan phi is equal to phi. That is CE upon AB dash. ठीक है. बढ़िया. So yeah, under the action of tangential force, the block ABCD gets shorter and gets the shape of ABC dash D dash by deforming through an angle phi. Tan phi is equal to now because angle phi is very small, then tan phi is equal to phi CC dash upon BC. The angular deformation phi in radians represent the shear strain. The angular deformation in radians represent the shear strain. Hooke's लगाया था कि stress is directly proportional to the limit within the elastic limit. Hooke illustrates that when a material is loaded within a proportional limit, stress is directly proportional to strain. Mathematically, sigma is directly proportional to the epsilon. Sigma is equal to E is equal to sigma upon A, where the constant of proportionality is called Young's modulus or modulus of elasticity. Where the constant of proportionality E is called Young's modulus or modulus of elasticity. Young's modulus is a property of solid material. Young's modulus is a property of solid material. Young's modulus is a property of solid material. When the constant of proportionality E is called Young's modulus और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग कहते हैं कि
Young's modulus. There is the sigma is directly proportional to the E, and where proportionality limit है आ जाती है. Elastic constants. ठीक है, बढ़िया. तो एक मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल. इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? देखो, homogeneous and isotropic material number of elastic constants are 4. Mu e g k. Poisson's ratio. Mu modulus of elasticity, Young's modulus E, modulus of rigidity, shear modulus G, and bulk modulus, that is k. Elastic constants are used to determine strain theoretically. Elastic constants are used to determine the strain theoretically, are used to obtain the relationship between stress and strain. ठीक है, बढ़िया. अब देखो, ठीक है. Elastic constants are used to determine strain theoretically, are used to obtain relationship between stress and strain. Poisson's ratio क्या होता है? It is defined as the ratio of lateral strain to longitudinal strain. ठीक है. Poisson's ratio क्या होता है? It is the ratio of lateral strain to longitudinal strain. ठीक है. It is the ratio of lateral strain to longitudinal strain. अच्छा, पॉइजन रेशियो का था लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. इसकी वैल्यू होती है 0 से 0.5 के बीच में. Poisson's ratio is dimensionless. The value of mu lies between 0.25 to 0.33 for the most of the engineering materials. Value of the between ठीक है, बढ़िया. अब देखो, Poisson's ratio तो हो गया. The value of mu is 0.25 0.33 for the most of the engineering materials. Modulus of elasticity of Young's modulus. Modulus of elasticity of Young's modulus. तो it is defined as the ratio of normal stress and normal strain. ठीक है, and material is loaded with elastic limit. Young's ठीक है, बढ़िया. अब देखो, it is defined as the ratio of non-normal stress and normal strain when material is loaded within the elastic limit. ठीक है. Young's modulus normal stress normal strain. Unit of Young's modulus is same as the unit of stress because strain is dimensionless quantity. Newton per meter square, Pascal, kilopascal, megapascal, GP. E is the property of the material. Modulus of elasticity is equal to Young's modulus is the property of material. Modulus of rigidity. ठीक है, बढ़िया. Newton per meter square, Pascal, kilopascal, megapascal, GP. G is a property of the material. Bulk modulus. So it is defined as the ratio of volumetric stress and volumetric strain. It is defined as the ratio of volumetric stress and volumetric strain. And material is loaded with quincy. ठीक है, बढ़िया. तो इधर हो गया बल्क मॉडुलस का होता है. इट इज बल्क मॉडुलस का होता है भाई. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक डिपेंड द रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड मटेरियल लोडेड विद इन इलास्टिक limit वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज सेम एज यूनिट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज द स्ट्रेनलेस the strain is a dimensionless quantity.
ठीक है। बल्क मॉडल देखो 3 रिलेशन है, इसको रिलेशन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, रिलेशन लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज बेस, ठीक है। देखो इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तीसरा है हमारा इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस में g इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस में g। अच्छा, तो एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि है क्या है ना, देख म्यू इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो दूसरा मॉडुलस इलास्टिसिटी बोले देंगे, मॉडुलस इलास्टिसिटी और एंस मॉडुलस ई दिया है। तीसरा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सीएल मॉडुलस। चौथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सीएल मॉडुलस, दैट इज जी एंड बल्क मॉडुलस, दैट इज के बल्क मॉडुलस। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब देखते हैं। कष्ट है रो ज्ञान जो गिरधर भाव में है नाव फसी तार। रिलेशन बिटवीन ई एंड म्यू आ सकता है, डेरिवेशन है। दूसरा रिलेशन बिटवीन ई एंड म्यू आ सकता है, रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन दिस इज आ सकता है, रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन ई जी एंड के, दैट इज 8 9kg 3kg प्लस जी। तो देखेंगे इसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ डक्टाइल एंड ब्रिटल materials, stress strain diagram for a ductile and a brittle materials। तो a stress strain diagram is a graphical representation of the relationship between stress and strain in a material. It provides valuable information about a material's mechanical properties and behavior under various loading conditions। अच्छा, ductile and brittle materials have different stress strain behaviors and these diagrams अगेन देखें। ठीक है, देखो it provides valuable information about a material's mechanical property। ठीक है, बढ़िया। अब देखो क्या है, बढ़िया। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स have different stress system behaviors and their diagrams look distinct। ठीक है, it provides valuable information about a material's mechanical properties and behavior under various loading conditions। Ductile materials are capable of undergoing substantial plastic deformation। ठीक है, देखो ठीक है, बढ़िया। स्ट्रेस डक्टाइल मटेरियल पढ़ लिए हम लोग, ठीक है।
क्या होता है कि ductile materials are capable of undergoing substantial plastic deformation before failure. Ductile materials are capable of undergoing substantial plastic deformation before failure. Example, mild steel. Brittle material कहते हैं in the case of brittle materials no perceivable deformation is obtained before failure. Brittle. Example, cast iron. ठीक है. Stress strain diagram for a ductile material. Mild steel ऐसे. Proportionality limit. Up to this limit stress is a linear proportional linear function. ठीक है. The stress strain curve for ductile material have the following characteristics. First one is proportional limit. ठीक है. The stress strain curve for a ductile. The stress strain curve for a duct. जी, हर हर महादेव मामा जी. The stress strain curve for a duct. Good morning, good morning, Har Har Mahadev. The stress strain curve for a ductile material have the following characteristics. Proportionality limit. Up to this limit, stress is a linear function of strain and material obeys Hooke's law. Up to this limit, stress is a linear function. Stress is directly proportional to the strain, and 0 is a straight line, and its slope represents the value of modulus of elasticity. G. Derek Kovai, welcome to our stream. OA is a straight line, and its slope OA is a straight line, and its slope represents the value of modulus of elasticity. OA value of represent modulus of elasticity. Sigma is equal to A. Sigma is equal to A is equal to sigma upon A. ठीक है. Elastic limit B. Elastic limit B. जैसे B. It represents maximum stress up to which a material is still able to regain its original shape and size. It represents maximum stress up to which material is still able to regain its original shape and size after removal of load. That is, up to this point, deformation is recoverable. Yeah. It represents maximum stress up to which material is still able to regain its original shape and size after removal of load. That is, up to this point. Yeah, बढ़िया. So it represents maximum stress up to which the material is still able to regain its original shape and size, and after removal of load, that is, up to this point, deformation is recoverable. ठीक है. अपर यील्ड सी पर देखा जाए, सी पर देखा जाए, बी से सी, तो अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट डी. अपर यील्ड पॉइंट सी एंड द लोअर यील्ड पॉइंट डी. देखो, beyond the elastic limit the material shows considerable strain even though there is no increase in load. Beyond the elastic limit the material shows considerable strain even though there is no increase in load. Deformation is not fully recoverable. That is, the behavior of material is inelastic, and this phenomena from C to D is called yielding. B. अरे अभी बी तक गए, बी से सी नहीं जाओगे क्या? ठीक है. Beyond the elastic limit, the material shows considerable strain even though there is no increase in load. Beyond the elastic limit, the material shows considerable strain even though there is no increase in load. Deformation is not fully recoverable. That is, recoverable of behavior of material is inelastic. The phenomena from P to D is called yielding. Ultimate stress point A. After yielding has taken place, the material becomes hardened, and increase in load is required to take the material to its maximum stress at point E. Point E represents the maximum stress of this curve, and this point is known as the ultimate stress point. Point E is known as the ultimate stress point.
After yielding the has taken place, the material becomes hardened and increase in load is required to take the material to its maximum stress at point A. Point A represents the maximum stress of this curve, and this point is known as ultimate stress point, breaking point. In portion AF, there is a falling of the ठीक है stress strain diagram stress strain diagram for brittle materials stress strain diagram for a brittle material that is a cast iron ठीक है for brittle material like cast iron no appreciable deformation is obtained and the failure occurs without yielding and the failure occurs without yielding ठीक है for brittle materials like cast iron, no appreciable deformation is obtained and the failure occurs without yielding. Ductile materials give information indication before failure. Ductile materials gives indication before failure. Brittle materials fail suddenly without any brittle. But ductile materials so give indication before failure. But the brittle materials not so any. ठीक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसे जाएगा वैसे ऐसे हो जाएगा कदम बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी का था फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज अल्टीमेट स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस ठीक है बढ़िया फॉर सेफ डिज़ाइन ठीक है एफ ओ एस बोले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी for safety design factor of safety must be greater than unity and how much factor of safety is required depends on materials properties design loading conditions uncertainties applications etc for example civil engineering structures like bridges and buildings may have a factor of safety around 1.5 to 2 while aerospace and nuclear engineering applications may be require factors of safety that are much higher than 3 or 4 as the factor of safety increases, the cost of product also increases. ठीक है also considerable parameter. ठीक है that's all. Okay everyone. So we have just completed our today's target. I hope that you have also studied with me. You have also completed your target. You have also consistent with me. And if yes, then congratulations. Okay, so it's a time to end this stream. If you haven't liked the stream, please like the stream. And okay, तो फिर मिलते हैं कल 4:30 से 7:30 तक पढ़ेंगे ठीक है आज का टारगेट कम्प्लीट हुआ तब तक के लिए बाय बाय हैव अ वंडरफुल डे हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को बाय 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 बाय